Hello guys, this is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the Stokes force and terminal velocity. So this is the Stokes force, Stokes law. So according to Stokes, whenever any liquid drop or just like a raindrop is falling in a homogeneous medium just like a water, so the Stokes force is equals to 6 pi eta r into v, okay, where eta is equal to coefficient of viscosity, r equals to radius of the liquid, and v equals to the velocity by which this liquid drop is falling. So according to the Stokes, whenever any liquid drop just like a raindrop is falling, freely falling in a homogeneous medium just like a water, so here the Stokes force directly proportional to the velocity by which this liquid drop is falling. So F proportional V, and F is equals to 6 pi eta r into V, where eta is equals to coefficient of viscosity, r equals to radius of the liquid drop, and V is equals to the velocity. Okay, so this is the Stokes force and it is directly proportional to the V. So using this we will solve the terminal velocity. So what is the terminal velocity? Terminal velocity. Okay, so it is a constant velocity. It is a constant velocity by which any liquid drop just like a raindrop is falling in a homogeneous medium is called terminal velocity. It means it is a constant velocity by which any liquid or raindrop which is falling, spherical drop which is falling in a homogeneous medium like water, that velocity is known as terminal velocity. So what will be its formula? So let me consider this is a raindrop, a spherical raindrop whose radius is r, spherical raindrop radius r and density rho. Okay, radius r है और density rho है, is falling in a homogeneous medium just like water. It falls in this homogeneous medium. Okay, so whenever it is falling, then what will happen? Just look here. So the Stokes force is directly proportional to the velocity. So as well as this velocity increases, then this value of Stokes force will be also increases. So but such a condition has been come when the resultant force will be zero. अब कैसे होगा देखिएगा, जैसे लिक्विड ड्रॉप आकर के इस पे गिरती है तो जितनी साइज की ये स्फेरिकल ड्रॉप है उतना ही लिक्विड रिमूव करेगी, जस्ट लाइक टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो ये आर रेडियस का, बट इसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की ये हमने कुछ मान लिया जैसे सिग्मा है. सो जितना मास इस ड्रॉप का होगा उतना ही मास या वॉल्यूम रिप्लेस करेगा ये ड्रॉप. तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे लिक्विड ड्रॉप इसमें गिरती है तो इसका बाउंसिंग फोर्स ये होगा बाउंसिंग फोर्स अपवर्ड. ओके, एंड वेट इसका होगा डाउनवर्ड, वेट होगा इस ड्रॉप का. ओके, और ये स्टोक्स फोर्स जो होता है ये इससे बैलेंस होगा. ये दोनों, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम बाउंसिंग फोर्स और स्टोक्स फोर्स ये होता है जो ड्रॉप फॉल करती है. तो यहाँ किसी सिचुएशन पर देखिएगा जितना मास इसका यहाँ पर रिप्लेस करेगा इस लिक्विड का उतना ही मास इसका है. तो
ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ ये स्टोक्स फोर्स है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, बाउंसिंग फोर्स इसी तरफ लगेगा एफ डैश एम 2 इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका मास जो होगा यहाँ पर m2 होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा, और इसका यहाँ पर मास होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, इसकी डेंसिटी रो है। ओके, और जब ये वेट होगा, ये वाला फोर्स इसको हमने डबल डैश मान लिया, 4/3 पाई आर क्यूब जी भी इंटू रो जी। Okay, is it clear? So whenever this raindrop whose mass is m, just like 4/3 pi r cube into rho, is falling under the gravity in a homogeneous medium like water whose density is sigma, so here act upward this Stokes force, and upward this bouncing force, and downward this weight. So how will this balance? So this is f plus f dash upward, and this is f double dash downward, and at equilibrium both will be equal. Okay, it means f result will be 0. So at the result position or at the equilibrium position resultant force will be 0. In that situation, that liquid drop is falling with the constant velocity. That constant velocity is known as terminal velocity. So let me discuss here, putting all these value in here. So f plus f dash is equals to f double dash, so f equals to f double dash minus f dash, this is equals to 4/3 pi r cube rho into g minus 4/3 pi r cube sigma into g, and this is equals to 6 pi eta r into v. Okay, so 4/3 pi r cube g common rho minus sigma, it is equals to 6 pi eta r into v. So v is equals to 4 pi r cube g rho minus sigma upon 3 into 6 pi eta into r. Okay, so after solving this equation, it will be equals to v equals to पाई से पाई कैंसिल आउट, एक r से r कैंसिल आउट, 4/18 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन थीटा. ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन थीटा. सो दिस इज द terminal velocity. Okay.